start now. So the thyroid glands, the basal metabolic rate, stimulate and consist of right and left lobe that are joined to each other by. Now it is actually situated the lower part of the front and sides of the neck. It regulates the basal metabolic rate, as you know, and a third or pyramidal lobe also sometimes from the isthmus. A third isthmus और फ्रॉम वन ऑफ द लोब्स, या तो isthmus से भी प्रोजेक्शन दिख सकता है, नहीं वी कैन सी दिस pyramidal lobe. So sometimes what happen, a fibrous or fibromuscular band also will be there, that is known as the liver. Okay, so एक pyramidal lobe हो सकता है, and again one fibrous और fibromuscular band देखते हैं थायराइड ग्लैंड में, नीचे जाते हैं एंड टू द कहाँ पे अटैच होता है, टू द isthmus और टू द pyramidal lobe. So this is known as the levator of the thyroid gland, or you can say the levator glanduli thyroidi. So this is another thread की ग्रोथ, ठीक है, होता है एक isthmus से. Okay, I'll show the diagram. Sorry. Okay, one is pyramidal thyroidi, levator of the thyroid gland. Can you see in this diagram? ठीक है. So sometimes what of thyroid of a glandular element we can see glandular substance, or you can say above the isthmus. So this is sometimes always present. Okay, so this is all about the just from the middle of thyroid cartilage to the fourth or fifth tracheal ring. It may varies. ठीक है. एक एक लोब जो है राइट एंड लेफ्ट लोब, the extension of this middle of the, क्योंकि the larynx is totally made up of a cartilaginous thing. So उसमें से एक thyroid cartilage है, cricoid का जो extension है cartilage to the fourth and fifth tracheal ring तक. ठीक है. So the isthmus extends from the second to fourth tracheal ring. isthmus कहाँ पे होता है, टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग, इस साइड सेकेंड से लेके फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक isthmus होता है. नाउ डायमेंशन ईच लोब measures about 5 into 2.5. Excuse me. Class नीचे. PE. Sorry for the interruption. So each lobe measures about 5 into 2.5 centimeter and the isthmus 1.2 into 1.2 centimeter. ठीक है. And the gland weights about in females in males. ठीक है. Generally rise during menstruation and pregnancy time में भी thyroid gland का connective tissue है. So this connective tissue condense to form the true capsule. यही connective tissue condense होके ट्रू कैप्सूल फॉर्म करते हैं जो एकदम ग्लैंड्यूलर सब्सटेंस के साथ होता है. देन द फोर लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल करते थे, जैसे पैरोटिड को करते हैं, सब मैंडिबुलर को करते हैं, राइट द डीप सर्वाइकल फेशिया. इट इज़ थीन अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब्स. ये भी मैं बताई थी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब्स में ये लेयर बहुत थीन है बट थिक ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी. इनर साइड में ये थोड़ा सा थिक है जहाँ पे वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी फॉर्म होता है. ओके, लास्ट डे भी मैं बताई थी. सो व्हाट हैपेंड इफ़ देयर इज़ एनी स्वेलिंग, और फिर थायराइड ग्लैंड का जो सब्सटेंस है, थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, तो बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट टू द लैरिंग्स, मतलब वो थायराइड या क्रिकॉइड कार्टिलेज तक अटैच्ड होता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी. So during the deglutition there will be the movement of whole thyroid gland. If gland it has two capsule, so true capsule is the peripheral condensation of the glandular connective tissue, and the false capsule along the posterior border of the lobe where it forms the suspensory ligament of Berry, cricoid cartilage of the larynx case, the
thyroid capsule, you can see here, देखिए, if you see this diagram, see the false capsule will be on the outside because it is forming by the pretracheal layer of the cervical fascia, and after that there will be the plane of a cleavage. ठीक है, this is forming by the condensed periglandular tissue. तो ट्रू कैप्सूल के नीचे आप लोग देख सकते हो there will be a large venous plexus present, and then the glandular substance of the thyroid gland we can see. So in case of prostate, see, prostate also is a gland, so there will be, again there is a true capsule and false capsule. So see, prostate का क्लास आप लोगों का पहले ही हो चुका है. So see, there will be the false capsule. false capsule के बीच में ये venous plexus है. So ये जो plane of cleavage आप लोग देख रहे हो यहाँ पे true and false में, this is present in case of prostate gland just beneath the true capsule. Glandular substance के साथ ही वो पूरे connective tissue thyroid gland. During the surgery हम लोग को gland में उसको ऑपरेट करना है. सर्जिकल प्रोसीड्यूर विल बी डन विद द ग्लैंडुलर टिश्यू. सो सी, कॉमन सेंस देखो, सब डायग्राम सब्सटेंस हम लोग को इजीली मिल जा रहा है. उसमें ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल को हम क्योंकि ट्रू कैप्सूल के नीचे से ही ऑपरेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं होगा क्योंकि बच ही नहीं रहे हैं हम लोग. बट इन केस ऑफ thyroid gland, see, in case of thyroid gland we can see here the just near to the glandular substance. Clear? Diagram देखो, the glandular substance of that is very close to the venous plexus. So whenever we operate or any surgical procedure will do with the thyroid gland, happen we remove up to the veins rupture होने का, the true and false capsule intact रहता है. But in case of thyroid gland, with the true capsule we have to operate or we have to remove from the thyroid gland. तो ये थोड़ा सा difference है. This is the important surgical event. Now अभी dissection आप लोगों का नहीं हो रहा है. You हो, please go through the video, YouTube videos, dissection video. Right lobe also you can see here. Then this is the levator glandular जो hyoid bone से लेके isthmus तक. Beneath this thyroid gland we can see, and so this is the thyroid gland. Now coming to the all about the gross structure of the thyroid gland. ठीक है. So first we'll see the lobes. The lobes are generally conical in shape, having an apex. Lobes में क्या है? Lobes generally conical shape में होता है, which has an apex, a base. एक apex होता है, 3 surfaces. In case of thyroid gland there will be 3 surfaces. Surface, medial surface, you can say which is near to the pyramidal lobe. Lateral surface and the posterior part where this gland का एक apex है. It has an apex, a base and 3 surfaces, lateral, medial and posterolateral. Clear? Now 2 borders also will be there. One is anterior. Now coming to the apex and slightly laterally. ठीक है. Apex किस में होता है? Upperly by the attachment of the sternothyroid cartilage. ठीक है, वो sternothyroid muscle होगा वहाँ पे. तो superiorly it is limited by the attachment of sternothyroid. The apex क्या है? It is directed upward and little laterally, and it is of the thyroid cartilage. Thyroid cartilage में sternothyroid रहता है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा limited होता है उसी एरिया में. Now the main thing, nerve. याद रखना बहुत अच्छे से. The apex of the thyroid, the superior thyroid artery and the external laryngeal nerve. Important thing याद रखो, बाद में मैं बताती हूँ क्यों याद. Laryngeal nerve. Now coming to its base. The base is at level with the 4th or 5th tracheal ring. 4th और 5th tracheal ring जहाँ पे होता है, base वहीं पे रहता है, and it is related to the, again important याद रखना, it is related to the base is related to the inferior thyroid artery and the recurrent laryngeal nerve. Inferior thyroid artery and the recurrent laryngeal nerve. Now coming to the lateral or superficial surface is convex, and lateral surface जो होता है which is convex and is covered by the, first will be the, imagine कर लो
thyroid gland will be here. So I'm telling about the lateral surface of the thyroid gland. तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट दिखेगा स्टर्नोहायोइड, क्योंकि हायोइड मसल से वो ऐसे आते हैं. स्टर्नोहायोइड दिखे. सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड ऑल्सो यू कैन सी हियर. याद करो ट्राइंगल को. So superior belly of omohyoid also will be there. So sternothyroid also will be there, जो thyroid cartilage में attach होता है, and the anterior border of cleidomastoid. So 4 muscles covers the lateral surface of the thyroid gland. क्या क्या है? sternocleidomastoid, superior belly, anterior. Now coming to this is related to the, ये भी याद रखना बहुत easy है. डायग्राम देख लेना BDC में, एक डायग्राम क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Surface is related to 2 tubes, trachea and esophagus, 2 muscles, inferior is the so 2 tubes, trachea, esophagus, 2 muscle, inferior constrictor and cricothyroid, excuse me, and 2 nerves, external laryngeal and recurrent laryngeal nerve. The posterolateral surface or posterior surface is related to the carotid sheath. Now coming to the anterior border is thin and is artery. Okay, so ट्यूब में तो एकदम क्लियर ये सब दिखता है, आपको पता चल जाएगा. The anterior border, ठीक है. Now coming to the posterior border, it is related to the inferior thyroid artery. The anastomosis between the superior and inferior thyroid arteries. The parathyroid gland, thoracic duct only on the left side. So the posterior border क्या है? Posterior border थोड़ा सा आप लोग को इमेजिन करना पड़ेगा. little bit thick and rounded होता है, and यही border सब करता है medial and posterior surface को. Then this border is related with the inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery ये नीचे से आते हैं thyrocervical trunk से. तो inferior thyroid artery नीचे से branch and superior branch of the posterior भी होता है, posterior branch of superior and ascending branch of inferior thyroid artery का. ये arterial supply. नेक्स्ट posterior border और के साथ रिलेटेड है, parathyroid gland के साथ रिलेटेड है, and that side connects the lower parts of the 2 lobes surface and 2 borders क्या, superior border, inferior border. यही isthmus right and left lobe को कनेक्ट करते हैं. ओकेशनली समटाइम्स हम लोग देखेंगे द ईस्टर्न केस है, now coming to the relation of the by the jugular vein and the fascia and skin. surface is really, तो anterior surface इतना है, posterior surface रिंग के बीच में, and it may place that upper border is related with the anastomosis, ठीक है, and lower border is related with the inferior thyroid veins. इसी border clear हुआ. So the thyroid gland has 2 lobes also. तो ये pyramidal lobe generally isthmus से भी होता है, isthmus से extend होता है. We can see the accessory thyroid gland also, but it is very rare which is present just above the isthmus or in the vicinity of the lobes also. ठीक है, तो ये basic things है. After that thyroid gland का क्या क्या पार्ट है? Each lobe contains 1 apex, एक apex होता है लोब में, होता है. Then 3 surfaces, medial surface, lateral surface and posterolateral surface or posterior surface also you can say, और anterior and posterior border ये lobes का है, and upper border, lower border also you can say that. समझ में आ गया? प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई करो. रिलेशन समझ में आ गया कि मैं और एक बार रिपीट करूं? तक बोला वो क्लियर है? अच्छे से समझ आया सबको? प्लीज फास्ट रिप्लाई. ओके,
please. And thyroid gland also are very important. It is comes as, please अच्छे से सुनो, ठीक है. The thyroid and inferior thyroid artery. I'll tell you elaborately and you have to write also elaborately about the superior and inferior thyroid कि वो कहाँ से आते हैं, क्या उसका fate है. ये thyroid artery. The first anterior branch of external carotid artery. ठीक है. ये डायग्राम प्लीज, ठीक है. ये डायग्राम देखो तो thyroid gland is supplied by superior is the downward and forward in intimate relation external laryngeal nerve. यहाँ पे बहुत क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है ये जो है superior thyroid artery, it is very closely related with the external laryngeal nerve. दिख रहा है. Then after giving branches to the adjacent structure, ये जो adjacent structure है, branches to the adjacent structure, what happen? It pierces the pretracheal fascia. Now ये pretracheal fascia को pierce करके अंदर जाते हैं and दिख रहा है reach up to the upper pole of the lobe. ये जो it is divided into anterior and posterior branches. Now the anterior branches क्या होता है? Anterior branches descends on the anterior border. ये anterior border है, ये anterior branch descend होता है anterior border of the lobe से and continues along the upper border of the isthmus. फिर ये क्या होता है? Continue होता है up to the upper border. Superior thyroid artery is arising from the descend downward or runs downwards and forwards and with very close relation external laryngeal nerve. ठीक है. Then it gives branches to the other structure or the related structure. Then it pierces the pretracheal fascia and reaches up to the upper lobe of the upper, दोनों साइड में सेम. Now जैसे ये upper part or upper part of the lower branch and the posterior branch. Now what happened with the anterior branch? The anterior branch then descend downwards or along the anterior and reaches up to the upper border of the isthmus, and at the upper border of the isthmus this anterior branch and opposite side. So ये anterior branch का fate था. Now coming to the posterior branch, the posterior branch descends on the posterior side. Please आप लोग VDC का डायग्राम देखो, उसमें अच्छे से दिया हुआ है. So posterior border of the lobe and anastomose with the branch will posterior surface of the thyroid gland. Both the sides same. ठीक है. So this is about the superior thyroid artery. Clear? Thyrocervical trunk which is arise from the subclavian artery. Thyrocervical. तो subclavian artery का जो thyrocervical trunk है वही artery arise. Okay. Then it runs first, दिख रहा है पहले medially. What happened? And finally downwards जाते हैं to reach the lower pole of the lobe. Lower. It passes behind the carotid sheath के पीछे से ये जाते हैं. Middle cervical sympathetic ganglion and front of the related है ये इस टाइम का जितने सारे adjacent structure है ये. Then what happened? Its terminal part thyroid gland में, please see the thyroid gland. अपर पार्ट में क्या था? सुपीरियर थायराइड आर्टरी का एंटीरियर जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी था विच इज क्लोज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल laryngeal nerve. Here this inferior thyroid artery is very closely related to the recurrent laryngeal nerve, which is very important thing. The artery divides then into 4 to 5 glandular branches with ये adjacent surface में adjacent जितने सारे structures दे दिया. फिर लोअर पार्ट में क्या है? आफ्टर दैट इट pierces the substance or lower part of the glands. ठीक है. वन ascending branch भी ये देते हैं. वन ascending branch also it will give which posterior branch of the superior thyroid. ये पहले ही बोल दी थी. And inferior thyroid artery supplies the parathyroid gland also. ठीक है. ये parathyroid को भी सप्लाई करते हैं. Now this is the main arterial supply. Here thyroid is coming out from the external carotid. Then it runs downwards
and giving the branches to the adjacent structure. Then it reaches the upper part of the branch. Again it reaches the upper anterior, along the anterior border of the lobe, reaches the upper part of the or upper border of the isthmus, where it anastomoses with the fellow artery. Okay, मतलब दूसरे side. What about the posterior branch? Posterior, at the posterior border it anastomoses with the ascending branch of the inferior thyroid artery. Now inferior thyroid artery is arising from the thyrocervical trunk, which is a branch from the subclavian artery. Now first it going upward, then medially, then finally downward and reaches the lower part of the lobe. Then within this course it gives the branches, pierce the fascia separately and reaches the lobe and supply both the side. Okay. Now one more ascending inferior branch of the superior thyroid. So this is all about the arterial supply. Sometimes what happen, it is often said that superior thyroid artery, the supply, it supplies the upper 1/3 of the lobe and upper half of the superior thyroid artery, 1/3 upper half of the isthmus को, and that the inferior thyroid artery supplies the lower isthmus. ये ऐसे बोलते हैं. However, the superior inferior thyroid arteries anastomose freely both on the surface of the gland as well as in its substance, and the territories supplied by the two arteries overlap considerably. ठीक है, यही है mainly, but sometimes what happen in 3% cases, what happen, the thyroid is also supplied by the lowest thyroid artery. Maximum 3% cases में हम लोग ऐसे जिस known as the IMA, ठीक है, which arise from the ये directly from the arch of aorta or directly from the arch of aorta. ये क्या करते हैं, it enters the lower part, isthmus के lower part से ये enter करते हैं, it supplies the gland. So this is known as the lowest thyroid artery. Now accessory thyroid artery, the thyroid arterial supply of drainage, here we gland veins. Details. Thyroid vein emerges at the upper pole and वही same upper pole में आते हैं superior thyroid vein और है. It ends either in the interfacial vein, दोनों में से किसी एक में ये thyroid vein. Middle thyroid vein is very short but wide channel which emerges at the middle of the lobe and soon enters the हम लोग फिर thyroid artery, inferior thyroid vein. Inferior thymus, they forms a plexus, lower plexus in the left brachiocephalic vein is there in case of thyroid, which is known as the fourth में मतलब दिख सकता है, and drain into the internal jugular vein in case of thyroid gland. क्या क्या है, superior thyroid, middle thyroid, inferior thyroid and fourth thyroid vein of Kocher. So fourth thyroid vein, it is also drain into the internal lymph nodes. Upper part of the gland से upper deep cervical, this is the lymph from the middle cervical ganglion. ठीक है, मेन ये middle cervical ganglion from the superior and inferior cervical ganglion, totally vasoconstrictor in nature. मतलब these are vasoconstrictor inferior. Now coming to the clinicals, please gland, the situation, the all the relation, then the arterial supply, venous drainage, lymph feedback. Please जल्दी से बताओ. Now we'll start the applied. समझ क्या प्लीज़ रिप्लाई करो, प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन ग्रुप इस पे.
Okay, till now everything is clear. Parts, relation, arterial supply, venous drain. To all, please give me first feedback. I'll start the. Thank you. We'll start the clinical, which is known as goiter, should be palpated. जो partial thyroidectomy होता है, मतलब some part of the glandular substance we have to remove. ठीक है, a partial thyroid मतलब left behind. This avoid the risk of simultaneous removal of the posterior. This avoid the risk of simultaneous of post operative myxedema. मतलब पैराथायरॉइड्स का जो पार्ट है हो जाता है, तो दैट इज वाई द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोब हम लोग छोड़ देते हैं इन केस ऑफ लैरिंज. तो थायरॉयडेक्टमी के टाइम में आप लोग देखे थे सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी इज क्लोज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व. देखे थे नियर द ग्लैंड लिटिल एक के साथ हम लोग ड्यूरिंग द थायरॉयडेक्टमी सुपीरियर थायरॉयड को लाइगेट करते हैं, ताकि मतलब अवे फ्रॉम द ग्लैंड नहीं करते. अवे फ्रॉम द ग्लैंड होता है तो वो बिल्कुल आर्टरी के साथ रेफरेंस रहता है. द इंफीरियर थायरॉयड वी लाइगेट द अवे फ्रॉम द ग्लैंड. क्यों अवे फ्रॉम द आर्टरी आ रहे हैं विच इज क्लोज रिलेटेड आएंगे ये आर्टरी के साथ एकदम नियर द ग्लैंड और सम gap will be there. So we ligate the inferior gland because of this and ligate the superior. ये हमेशा याद रखना. And myxedema in adults ये तो पता which will not physiology पूरा hormonal disbalance everything disease वगैरह treatment आप लोग उधर ही पढ़ोगे. Now the benign and even compressed neighboring structure. If there is any, this may displace and even compress neighboring structure. ये सबको तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है. इफ़ देयर इज़ एनी बिनाइन ट्यूमर टेंड टू इन्वेड एंड इरोड नेबरिंग स्ट्रक्चर्स. प्रेशर सिम्टम्स एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट्स आर कॉमन इन इन्वेड और इरोड आसपास के स्ट्रक्चर है. नर्व इन्वॉल्वमेंट्स आर कॉमन इन कार्सिनोमा. सिम्पली रैपिड होगा. नर्व इन्वॉल्वमेंट है लिम्फ आता है. अदरवाइज बिनाइन ट्यूमर में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा सा जो एड्रेस कर सकता है. So these are all the clinical importance. One is the swelling, another one partial thyroidectomy, and during the thyroidectomy, superior kaha ligate to this artery and the malignant tumors. What will happen? Clear everything, everyone. So thank you very much. समझ में आ गया कि yes everything is everyone stay safe and goodbye. हाँ इसलिए नहीं डालती हूँ. यहाँ पे तो 140 दिखा रहा था.